तारीख है 2 दिसंबर 2022। समय हो गया है 12:20 PM। एक बड़ा फेमस वॉर वॉरफेयर है जो विश्व के कई देशों पे लागू हुआ। ये वॉरफेयर है गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसको विश्व के कई देशों में पढ़ा भी गया, पढ़ाया भी गया। पर आप जानते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर है क्या? नहीं पता, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स very famous warfare, and that is guerrilla warfare. What is guerrilla warfare? Do you know? What do you think? Either it's a fight in a jungle, or it's a fight with a persons who are hide in a jungle, or it's a camouflage fight, or it's a fight uh, uh, unwillingly, unknowingly, on unknown location, a fight will start. Weaponized fight between two groups, right? Now, I will explain you what is guerrilla warfare. It's a very simple, as its word shows. Guerrilla war is a nation or any nation will send gorillas, silverback, a species of monkey in your nation, and they will start fight with you. You will have to pay the money to them. You will have to answer them for their stupid questions. Suppose if someone smuggle a gorilla in your nation. Now, what is guerrilla warfare? So, like an African nation where the gorilla silverback are in very much numbers, what they do means how Africa is fighting with the war in any nation like India. In our last investigations, we found more than 40,000 and below 1 lakh gorillas here in India. Now, this is the guerrilla warfare. What they do? Once you go to visit to Somalia, they will smuggle gorillas with you in your nation. Now, what happened? They will send us some persons behind the gorilla and ask you some money and send drugs with the gorillas. This is guerrilla warfare and nothing else. Like in Chidiyaghar, Delhi Zoo, there is a gorilla. It is not for show off. It's not for exhibition. Actually, it's for guerrilla warfare. As since that gorilla here in India, you don't know that gorilla is an insurgent and he is a cannibalist and he can talk in Hindi. They trained those gorillas to give you body pain. In body messaging, they will give you a fake insurgency messages, and now you have to pay. They will not allow you to take that monkey back to their nation in Africa. They will ask you the money. This is the way of Congo government. This is the way of Africans to fight guerrilla warfare. And the same is guerrilla warfare is always run with the help of animals. How they will be frame you in terrorism. They will give you some animals in paper parties like panthers, cats, lions and tigers. This is the guerrilla warfare.
It's a very simple. And with the help of this guerrilla warfare, they will announce insurgency. What is insurgency? A using of violence. समझ में आ गई? बोला ना, अपनी माँ के चूत में ले लो ओवर रूल्ड और सैंक्शन. समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? Now this is the what is happening here. What is insurgency? I will explain. Using of violence and a violent protest to secure political goal is called insurgency. This is a IFA study. You will get a document. उसमें साफ बताया गया है कि अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा एक भीड़ की मदद से हिंसा का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना इंसर्जेंसी कहलाता है, मतलब बगावत. बागियों का इस्तेमाल, यूजिंग ऑफ इंसर्जेंस टू अचीव पॉलिटिकल गोल is a motive. Means who are not in favor of systematic government, opposing in favor public government by using insurgents is a real method of insurgency. Now the subject is, what is insurgent in real meaning? Actually, insurgents are weaponized, unlicensed group. They are cannibalists, they are rapists, they are kidnappers, they are gang of criminals. During the election, they activate these kind of groups. They will gather in 500,000 and 1,000 and 5,000 persons group and suddenly attack in any house. During the election or in election, the political leaders use these groups to ask them to attack on any house, and they occupied that house. They are criminals. This is insurgency. Like the same we captured Narendra Damodar Das Modi, and in earlier my reports I submitted to ICJ. The Modi was very much famous, and that the same thing he did in Gujarat riots. Actually, Gujarat riot was nothing. It was a kind of insurgency, and it's an insurgency by Narendra Damodar Das Modi in Gujarat, and he used to kill so many other political leaders, and and the person who are against is a tendency to rule. This is insurgency. Since then, the Narendra Damodar Das Modi is an insurgent. Now I would like to ask to Indian Army, would you like to teach me what is insurgency? Now the special battalions are created like K Force in Indian Army by Amit Shah and Modi was a step which is not acceptable by the Indian government and Home Ministry, because they created those forces with the help of insurgents. Now Google a word. I'm telling you, insurgent. Google this. Insurgent Trump.
You know who was Osama bin Laden? You don't know. He was a business partner of Donald Trump. Search it on Google. This is the Google server code. Now, what will be the answer of Ivanka Trump? Would you like to answer me, Ivanka Trump? You don't know what is who was the who was the a person name? Who was a person? Osama bin Laden. What was the relation of Osama bin Laden and between Donald Trump? Why are you not telling? I can send you more than 50 photographs of your insurgent army personals who were active in Afghanistan and in Iraq and in Syria and so many other nations. They go there just to buy opium. Exactly, madam. Search Google insurgent Trump or insurgency Trump. This is a Google server code, madam. I'm not telling you, who is giving this code. I have a very good person in my link. Yes, they all are the personals in United States of America's army uniform are Muslim terrorists. In name of war in Afghanistan, the Donald Trump. You know who is the Donald? The Mike Pompeo is a Donald. Write it down on a paper, Ivanka Trump. Just a moment. Just a moment. I will send you behind the bars for next 15 years. I'm promising you. Write it down on a paper. Write it down on a paper, Ivanka Trump. Yes, Mike Pompeo. Very close to Donald Trump. Mike Pompeo. Code is a Donald. And a person is very much famous in name of Donald Trump. Code is a Trump. Now place a two photograph side by side. Mike Pompeo, then Donald Trump became Donald Trump. They are insurgent. Don't worry, Mr. Pompeo, it's an investigation only. It's an investigation only. I know who is. Don't tell me. I know who is Melania. Melania is American citizen. No, she never married to Donald Trump. I know very well the real story. Yes, she was a native of White House. Yes, exactly. Please keep quiet. Keep quiet, Madam Ivanka Trump. Keep quiet. I know you are very much educated. You are world's worst famous spy from. I will give you the name from Baradari. अरे जाना यार इवेंका ट्रम्प तू अलवाब से है तू वहां भी है थप्पड़ दूंगा खींच के भिखारी कहीं की बारादारी की भिखारा नहीं है I'm talking to Ivanka Trump and I'm saying directly you are from Al-Wahab? You are from Wahhabi group? Shut up! You bloody beggars of Baradari Pakistan! Get out! Wanna compete with me? अरे यार वो आंख थोड़ी सी ब्राउन कर ले तो एक्चुअली व्हाट इज द सिचुएशन व्हाट दे डू दे यूज अ मेडिसिन सम आई ड्रॉप्स टू ड्रॉ शट अप to change the eye color and go for some to give the white color to their skin, color their hair.
and we US citizen. Shut up! You'll have to face very bad consequences, Mr. Donald Trump. You have to pay the heaviest penalty. You want a Trump organization? I'm telling you the reality of Trump organization. You know what is Trump organization? No, it is nothing. It's not a company. They just rename a building the Trump organization. साले भोसड़ी के शादी ब्याह में बैंड बाजे बजाने वाला मेरी माँ की चूत बैंड के लड़के थप्पड़ दूंगा खींच के भोसड़ी का बकचोदी कर रहा है बारादारी में बैंड का लोड़ा निकाह में बाजे बजाने वाला बैंड का लोड़ा बिस्मिल्लाह कहाँ का रिश्तेदार भाग भोसड़ी के तेरी माँ की चूत भिखारी की औलाद बैड कलर ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन मैं आगे चू मैं पेपर उठा के चेक कर रहा हूँ बैड कलर टैग है ये मैं जो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ का ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ये होटल भाई ये होटल जानता है किसका है तेरा ट्रम्प टावर बहन चोद दूंगा माँ के लौड़ो चोदना मत सिखाओ बहन के लौड़ो ट्रम्प टावर तेरी बहन चोद दूंगा माँ के लोड़े सच सच बोलते आई से जी मैं बता रहा हूँ पक्का मारूंगा तेरी माँ की चूत बुड्ढे साले बहन के लोड़े दो कौड़ी के माँ की चूत इनकी भिखारी कहीं के कमा नहीं सकते बहन के लंड साले भोसड़ी के रिलायंस कंपनी कहाँ है माँ की चूत धीरू भाई अंबानी कहाँ बना के बैठ गया बहन के लंडो इतना मारूंगा ना वो ट्रम्प टावर है? चूतिया बना रहा बहन का लोड़ा दुनिया को वैसे ही बैठ के लंड नवाज शरीफ बाकी छूत इन बैठ के लंडों की वो ईरान से बैठ के लौड़े भीख मांगते हुए यहां आ गए किचन नाम की चीज नहीं घर में बैठ के लौड़े होटल से खाना ला ला के खा रहे अच्छा कभी तो गवर्नमेंट बनेगी भागोगे नहीं भागोगे तुम्हारी बहन की चूत साले भिखारियों ट्रम्प टावर में बैठ के लंडो ने क्या करा एक कंपनी ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का माल है इसी माँ की चूत ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ वो बैंड की छोड़ी वो भिखारन माँ की चूत इसकी कमाला हैरिस इसका नाम से ही लग रहा मैंने ये एक और आगे बारादारी की सारे बैंड के लोड़े भिखारी मोहल्ला तो नहीं है ये मैंने सुना तो था वर्ल्ड में बहुत फेमस है एक जगह मतलब पूरे विश्व के भिखारी वहां बैठ के बैंड के लोड़े नए नए प्रोग्राम में लगे रहते हैं तुम वही हो क्या है वहीं से हो गया तुम अच्छा और कहता हम आईबी में भीख मांगते मांगते बहन के लोड़े राष्ट्रपति भवन के आगे बैठ जाते हैं मौका देखते ही राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए अरे बहन की चूत हमारी माँ के लौड़ो इन बहन के लंडों ने क्या करा मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प मारूंगा बहुत भोसड़ी के तू जानता नहीं अभी मेरे को बहन के लोड़े बहुत मेहनत से बने हुए हैं मकान इन बहन की चूत इनकी माँ की भोसड़ा मारा बहन के लड़े गंदे करते रहते हैं ये बहन के लौड़ों ने क्या करा हाँ ये एक कंपनी बनाई बहन की जो तेरी माँ चोद दूंगा मैं बहन के लोड़े विनय रावल अगर दोबारा फीड में आया तो पक्का मारूंगा बहन के लंडे पक्का मारूंगा बहन के लंडे पक्का मारूंगा फीड में मत आजियो दोबारा ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन नाम की कंपनी बना दी और बहन का लड़ा भोसड़ी का बैठे बैठे वो बाजा नहीं होता शादी में जो बजाते हैं वो बाजे बाजे पिक्चर से आइडिया आया है माला माल वीकली वही है ना तुम वही हो ना बहन के लोड़ो हैं तुम वही हो ना माला माल वीकली वाले हो ना ये माला माल वीकली का बाजे है कौन नहीं पता तुम्हें डोनाल्ड ट्रम्प
हद हो गई भाई साहब, हद हो गई यार। इवेंका ट्रम्प इतने दिन तू इतने सब में रही, अब तब भी तेरे समझ नहीं आई बहन की चुत तेरी। बारादारी पहुंच जा वहां, बहन के लोड़े भोसड़ी के हाँ जादू टोना दिखाएंगे और बहन चोद इवेंका ट्रम्प साइड से जो है ऑडियंस की जेब काटेगी। हंगामे में कोई जेब ना काट जाए, मैं बार बार समझा रहा था बहन के लौड़े भोसड़ी के, इनकी माँ की चूत। मतलब एक बार क्या हुआ, एक एक राजा महाराजा था, वो भाषण दे रहा, कुछ भिखारी भी सुन रहे थे। वो राजा को देखते ही राजा साहब करते हुए उसके साथ साथ घूमने लगे। राजा साहब गाड़ी बैठे चल दिए। राजा साहब के जाने के बाद जो है हेडचो चलो मोदी ने ऐसे हट गए वो चल रहा है नहीं बाकी चुप बैठ के लौड़ों की। तो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन इन बैंड के लौड़ों ने क्या करा, बिल्डिंग किसकी है, ट्रम्प से ही बताऊँ, मारूंगा बहुत बैंड के लौड़े, बहुत पैसा लग गया मेरा। तेरी कंपनी है वो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, बहन के लोड़े यूएस गवर्नमेंट तक को नहीं पता चलेगा ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई कंपनी नहीं है, पेपर कंपनी है। आतंकवाद के नाम पे आरडीएक्स की धमकी, बम की धमकी के बहाने से जो है सीआईए को तुमने हॉस्टेज बनाया। तो उसके बाद ट्रम्प ने जो है ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। और मेरे जहां पे भी होटल्स और कंपनियां बन रही होती थी ये पहले पहुंच जाते थे, सबसे पहले पहुंच जाएंगे ये। बस वही वाली बात है कि मैं, मेरे को ले रखा होस्टेज, मैं यहाँ रहा हूँ 15/31 में, और इवन का ट्रम्प आराम से माँ के चोट बहन के लोड़ा पैसा दे दियो, मारूंगा बहुत नहीं तो भोसड़ी के, जितना खर्च हुआ अब तक बना दूंगा तेरा यूएस प्रेसिडेंट। हाँ जी, इतनी बर्दाश्त करता नहीं मैं किसी की। जब बंद कर दे चूतिया पे मारेंगे, अलग काम अलग करवाएंगे तेरे से। तू भी सुन लो, तेरा भविष्य दिखा दिया था मैंने, सब्जी बेचने का काम होगा तेरा। ओ लड़के, डोनाल्ड ट्रम्प को बैठा दे वहां, वो तो फिर भी ज्यादा पैसे वाला काम है। इवन का ट्रम्प को बैठा दे वहां पे शाम को आके पैसे ले आया कर। बहुत पैसा बकाया है भाई। काम बहुत समय पहले से चल रहा था। जरताज गुल वजीर को एक दिन मेरी टीम ने बड़ा बेइज्जत करके निकाला था एक ऑफिस से। क्यों जरताज, आप वही लड़की हो पाकिस्तान में? वहां जा करके मेरे ऑफिस में मैनेजर की सीट पे बैठ गई जरताज, ठीक है। और ये क्या नाम है इसका, एक और है ये गोल मटोल सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये गया देखने के लिए हितेश के ऑफिस में। क्यों मोदी, इतना इतना बड़ा आदमी, इतना नाम कमाने के बाद भी बहन के लोड़ा ऐसी नीचता क्यों? डोनाल्ड ट्रम्प टावर की सच्चाई तो बता दे यार, ट्रम्प टावर की सच्चाई तो बता दे डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प टावर की सच्चाई तो बता दे। उस दिन सेकंड वॉइस मैं भी सुन रहा था मैडम। जरताज गुल वजीर, जिस ऑफिस में जा करके आप चेयर पे बैठ गई मैनेजर बन के, मैडम ने इशारा किया था ना आपको, उजमा ने पता नहीं किसने कहा था, जरताज आप जाओ यहाँ से, हितेश का ऑफिस है ये, नहीं आप यहाँ नहीं बैठोगे। कह रही नहीं, उसका ऑफिस दिखा, कह रही नहीं उसके ऑफिस में नहीं बैठ सकते आप, वहाँ घुस भी नहीं सकते। ये भी तो बता दो सच सच, क्या हो गया यार तुम्हें। बताओ तो सही, हम भी तो सुने। ये है डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की हकीकत। बिल्डिंग में जाके घुस गया, बाल सुनहरे कर लिए और डोनाल्ड ट्रंप बन बैठा। और समझ गए गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है।
जंगली जानवरों को पिप्पे या किसी बहाने आपको दे देंगे, अब इसे पालो, बड़ा करते रहो, और उस देश की धन संपदा, उस देश का भोजन जो है आप जानवरों को खिलाते रहो। अभी मैंने एक वीडियो भेज करके इंटरपोल को मैंने भेज बोला कि इस जानवर को जो है ना, भारत में था वो, इसको उठा के जो है अफ्रीका छोड़ के आओ। चिड़ियाघर में था वो गुरिल्ला। ये है गुरिल्ला वॉरफेयर, अफ्रीका की तरफ से। क्यों बे अदीद? निकाले सारे गोरिल्ला, छोड़ गया घरों में, या गोरिल्ला दे दिया, गोरिल्ला वॉर चल रहा है नक्सलियों का। चोदना सिखा रहे बहन के लड़े।